Hello student, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject Python Data Science, and in this subject currently we are studying about the chapter 1, and till now we study about different things which is related to the Python, like data structures, statements and loop. In particular, previous session we study about the statements, how if statement work, how if else work, and how if and else work. And after that we have shown the how for loop works, and with that we also shown the concept of tuple unpacking to make your code easier with the Python. In this session we are going to study about the while loop and the break, and how you can use the continue, and how you can create a function and concept of the function with the Python. So the first thing is about the while loop. So while loop will continue to execute the block of code until some condition remains the true. And like an example, while you are feeling hungry, you keep eating, and while you have two internet pack available, you keep watching videos, right? Means a particular task, कोई ऐसा task है कि इसको आप continuously करते रहते हो until you are satisfied with that, right? So similar thing with coding, कि जब आप Python में coding करते हो, at that time if you want to execute a particular block of the code, and you want कि आपने जो भी condition दिया है वो fulfill हो, वो true हो, तब तक वो loop continue run होना चाहिए. So at that time we are using the while loop. As you can see, syntax is written over here. अब while keyword use करोगे and then you are using some condition, and obviously we are using the colon, and after that we are writing our code according to our requirement, and definitely we are using tab or white space concept at the beginning, as we have shown in the previous session. कि for loop का आप यूज कर रहे हो या if statement का यूज कर रहे हो या if elif का यूज कर रहे हो, at that time you are using the tab or a white space. And we have this small demo over here. एक वेरिएबल लिया है जिसको x नाम दिया है, उसमें इनिशियली 0 वैल्यू स्टोर किया है, देन वी हैव रिटन द while and x is less than 3 then colon, and उसको हमने प्रिंट करवाया. And as we are using the while loop, we are giving your condition, means x plus plus is also validated in Python, but we have written over here x plus is equals to 1. मीन्स ये while में जाएगा, वो कंडीशन चेक करेगा, 0 इज लेस देन 3 तो वो 0 को प्रिंट करेगा, देन x का एक इंक्रीमेंट करेगा, x का वैल्यू बनेगा 1, 1 इज लेस देन 3 तो अगेन 1 को वो प्रिंट करेगा, अगेन x का इंक्रीमेंट करेगा विच इज 2, so 2 इज लेस देन 3 तो वो 2 को प्रिंट करेगा, देन अगेन x का इंक्रीमेंट करेगा एंड x बिकम्स 3. 3 की वैल्यू इज लेस देन 3 विच इज नॉट पॉसिबल, सो उसने 0 1 2 एंड 3 यहाँ पे प्रिंट किया, एज यू कैन सी ओवर हियर. एंड with the while we have also performed while else. Okay, so जो initial programming था वो यही था जो हमने यहाँ पे लिखा है, बस x की वैल्यू यहाँ पे 5 कर दी हमने, and condition is little bit not change, with the same thing we are going with x is less than 3 and उसको हम print करवा रहे हैं, and else में हमने दिया है if x is greater than 3. okay, so जब ये कोड रन होगा आउटपुट आ रहा है x is greater than c. so let's see practically कि while loop कैसे वर्क कर रहा है. again I'm using PyCharm for this. okay, let's start writing the code for while. so एक वेरिएबल लिया x, उसकी वैल्यू डिफाइन की, while x is less than 3 and colon and print x. okay, then x plus 1 is equals to, sorry, x plus is equals to 1. okay, so this is the coding for the while, simple while loop, like from this.
So it gives a 0 1 2 in the output. And दूसरा with else अगर हम use करते हैं, so let's change the value of x. Condition is remain the same, and we are adding over here. Sorry, we are adding over here else and in else we are going to print x is greater than 3. Okay, let's run this code. So as you can see, we have the output x is greater than 3. So this is the basic concept of while loop, how you can generate a while loop and how you can give the conditions according to your requirement in while. So whenever we are using for loop, while loop and do while loop, at that time with that we can also use some keywords like break, continue, pause. So let's see what keyword hold the value of individually. So if we are using break, अगर मैं break का use कर रही हूँ, so break out of the current closing or closest in closing loop. आपने जिस भी लूप में उसको लिखा होगा, उसका नियरेस्ट जो भी लूप होगा, वहां से वो उसको ब्रेक कर देगा, उसके लिए ब्रेक का यूज होता है. सो यहाँ पे फॉर लूप के साथ तीनों कीवर्ड्स का यूज किया गया है. एंड फॉर लूप लिया, फॉर कीवर्ड लिया, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, इन दैट वी हैव डिफाइंड द रेंज कि 5 तक हमें वैल्यूज प्रिंट करवानी है. In that again we have taken the if temporary is equals to 2, then it will break. मतलब जब ये for loop रन होगा तो हम temporary को प्रिंट करवाएंगे. उस टाइम पे वो 5 वैल्यू हमने रन करवानी थी, लाइक 0 1 2 3 4, बट temporary is equals to 2 आ रहा है, तभी हम उसको वहां से ब्रेक कर रहे हैं. सो 0 and 1 उन दोनों को प्रिंट कर रहा है. We'll see practically how break, continue and pass will work. But let's first understand the concept. Second one is continue. So continue goes to the top of the current closest in closing loop. Means कि आपने जो भी loop दिया है उसमें current closest loop है, उसकी टॉप की वैल्यू जो आपने दी है ना, वहां तक वो कंटिन्यू करेगा. आपने कोई अगर उसको टेम्पररी वैल्यू भी दी है, स्टिल आपने जो आपने कंडीशन में डिफाइन किया होगा वो उतनी वैल्यूज को प्रिंट करेगा. सिमिलर प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे ब्रेक पे रखा था, वहां पे सिर्फ कंटिन्यू को चेंज कर दिया गया है, बट वर्क इज डिफरेंट. लाइक हमने यहाँ पे 5 की रेंज दी है, तो वो 5 एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है. भले ही हमने यहाँ पे टेम्पररी इज इक्वल्स टू 2 दे दिया है, ठीक है, बट यहाँ पे हमने कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया है. सो हमने यहाँ पे जितने, अगर हमने यहाँ पे 6 दिया होता तो आउटपुट में 0 1 3 4 5 वैसे प्रिंट करता, राइट. वो उसको कंटिन्यू करता है. एंड द लास्ट वन इज पास. कंटिन्यू एंड ब्रेक का यूज में भी आप लोगों ने सी में देखा होगा, सी प्लस प्लस में देखा होगा, जावा में देखा होगा, बट पास इज द used in Python. So if does nothing at all will be used as a placeholder in the conditions where you don't want to write anything. At that time you can use the pass condition, pass keyword, and you can implement your program. So let's see how break, continue and pass will work. So again I'm going to the my PyCharm and पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, जो हमने while की प्रोग्रामिंग देखी. नाउ फर्स्ट ब्रेक के लिए देखते हैं. सो टेम्पररी वेरिएबल बनाया, उसमें हमने रेंज दिया which is 5, फिर if लिया टेम्पररी is equals to 2 colon, okay,
we have forgotten colon over here. Okay. एंड फिर उसको ब्रेक कीवर्ड लगा रहा है, फिर प्रिंट को टेम्पररी को प्रिंट करवा रहा है. सो लेट्स रन. Okay, there might be some error regarding this. I'll put that with the practical ones. After that, we have the function. So function in Python, to perform the function in Python, you need to create a clean, repeatable code. It is a key part of becoming an effective programmer, and a function is a block of the code which only runs when it is called. So Python function is defined using the def keyword. Functioning आपने सी में भी देखा होगा. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. df कीवर्ड यूज करना है, फंक्शन नेम यूज करना है और कॉलन डिफाइन करना है, एंड देन यू आर राइटिंग द कोड यू वांट टू एग्जीक्यूट इट, और उसमें टैब और वाइट स्पेस देना है. ओके, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया गया है, def कीवर्ड यूज किया है, फंक्शन का नाम है सेपरेटर. सेपरेटर के लिए फंक्शन बनाया है हमने पाइथन में. देन यहाँ पे हमने जो प्रिंट करवाया है, इट इज टू सेपरेट द थिंग्स. ठीक है, इसको जब भी आप कोई भी लाइन प्रिंट करवा रहे हो उसके बीच में एज ए सेपरेटर वर्क करेगा. तो फर्स्ट थिंग हमने प्रिंट करवाया हेलो वर्ड, उसके बाद हमने सेपरेटर यूज किया. जब भी वो सेपरेटर पे जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये वाली लाइन. एज यू कैन सी ओवर हियर, ये इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है. देन फिर अगर अगेन हमने प्रिंट करवाया फ्रॉम द दर्शन कॉलेज, देन वी हैव यूज्ड द सेपरेटर फंक्शन, and again the Rajkot. So let's see how it works in the PyCharm. Okay, so I cleared the screen, and we are starting the program for separator. So def keyword, separator create किया function हमने. okay, उसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं. क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हमें जो बीच में जो वैल्यूज चाहिए. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे एज ए सेपरेटर, हम ये क्रिएट कर रहे हैं. देन हम प्रिंट करवा रहे हैं सपोज हेलो वर्ल्ड. उसके बाद मैं यूज करूंगी सेपरेटर का. अगेन प्रिंट करवाऊंगी जीपीयू इंजीनियरिंग गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी. उसके बाद अगेन आई एम यूजिंग सेपरेटर, एंड उसके बाद प्रिंट करवा रही हूँ ACT. एंड फिर अगेन सेपरेटर का यूज कर रहा हूँ. write down this in double quotation. Okay, let's run this.
Okay, there is no error, but somehow it couldn't print it. So let's do one thing. Let's just copy paste that code from the file. So I'm copy pasting that code from file. Okay. So there might be some small error, but it didn't show me. But as you can see, uh, separator program works perfectly, right? So you can use separator while you are doing a big code. At that time, you need to separate the things for your clearance if you are a good programmer or you want to become an effective programmer, because this is just the 8 to 10 lines code. but जब आप actual world में coding करते हो while you are working with the Python, so आपका वो जो code है that is around more than 1000 lines. so उस time पे आपका जो भी coding है उसको separate रखना is necessity, and at that time you can use the function. Okay, and function is still continuing with the two more things. One is docstring and another one is return statement. So docstring helps us to define the documentation about the function within the function. कि आपने जो function create किया है उसके अंदर अगर आपको और डिटेल में फंक्शन की चीजें चाहिए, सो यू कैन यूज द डॉक स्ट्रिंग एंड उसको आपको ट्रिपल कोट के साथ एंड करना है. सो यहाँ पे एक फंक्शन, उसकी सिंटेक्स दी गई है, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया def, फंक्शन को नाम दिया, एंड दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट जब आप डॉक स्ट्रिंग परफॉर्म कर रहे हो. एंड यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक्सप्लेन द फंक्शन इनपुट एंड आउटपुट क्या है और उसको खत्म कैसे करना है उसके बारे में, एंड देन आपका कोड. एंड दूसरी चीज है रिटर्न स्टेटमेंट with the function. So it returns allows to assign the output of the function to a new function and send us back to the result of the function instead of just printing it. So यहाँ पे return statement use किया गया है. def कीवर्ड यूज किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें दो वैल्यूज पास करवाए n1 n2 और उनका एडिशन कर दिया, वो उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं. ठीक है, जब भी एडिशन होगा तो ये रिटर्न फंक्शन पे आएगा. यहाँ पे क्या किया, sum1 is equals to add number 5 and 3. तो जब भी यहाँ पे हम sum1 को प्रिंट करवाने जा रहे हैं तो वो रिटर्न फंक्शन पे जाता है और वहां पे वो परफॉर्म करता है 5 plus 3, then it will print 8. and then sum2 again add number function पे जाएगा, जो वैल्यूज यहाँ पे n1 and n2 के दिए हैं उसका समेशन करेगा और रिटर्न फंक्शन यूज करेगा एंड फिर उसको प्रिंट करेगा जिसकी वैल्यू आ रही है 7. okay, so let's perform the return function program with Python, and I'm moving towards the PyCharm. okay, मैं यहीं पे उसकी कोडिंग कर दे रही हूँ. def कीवर्ड यूज किया, वेरिएबल बनाया add number n1 n2 कंप्लीट किया, रिटर्न n1 plus n2, sum1 is equals to add number n1 n2 की हम वैल्यूज दे सकते हैं like 5 and 3, and sum2 is equals to add number, उसके वैल्यूज दे रहे 6 and 1, print sum1, print sum2. okay,
Okay, so as you can see in the output, it gives us the summation of n1 and n2 and it uses the return function. So that's it about today's lecture, and this is the end of our chapter 1. We'll see the chapter 2 from the next lecture. If you guys have any doubt regarding this particular session, you can put your question in below comment box. Thank you so much.